class. So today's topic in the course of financial management is about portfolio. We are dealing with the return and the risk. Last class we calculated or we studied what is the required rate of return on an investment as an investor and what is the risk. Risk is measured by generally by standard deviation. That is the dispersion of return around its mean. Today we'll focus on the concept of first of all portfolio. What is portfolio in the domain of finance? Portfolio actually is a combination of different investments. Like for risk diversification, you have listened the term, okay, don't put all your eggs in one basket. ताकि risk diversify हो जाए. We need to diversify the risk. इसके लिए one of the approach is to make a portfolio. As I have given you an assignment to make a portfolio of your investment, so you have selected around 8 companies of total investment of 2 million rupees. So 2 million rupees में you have investment in different portfolio, something in pharmaceutical, automobile, food industry, banking industry, cement industry. तो उन सबको मिला के that is your complete portfolio. हर इन्वेस्टर का अपना एक डिफरेंट पोर्टफोलियो हो सकता है. तो पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज. इट कैन बी बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फूड सेक्टर, ऑटोमोबाइल, उन सबको मिला के आपने एक पोर्टफोलियो बनाया. तो दैट इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो इन द डोमेन ऑफ फाइनेंस. वैसे तो पोर्टफोलियो का वर्ड यूज होता है गवर्नेंस में भी यूज होता है, जैसे कहते हैं ना कि मिनिस्टर साहब के पास कौन सा पोर्टफोलियो है, वो एक डिफरेंट सेंस में यूज होता है. लेकिन हम फाइनेंस में वी कॉल इट पोर्टफोलियो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिक्योरिटीज. एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरिएंस, हाउ टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर. क्या इफ मार्केट इज गोइंग अप तो डीजी सीमेंट इज आल्सो गोइंग अप, इफ मार्केट इज गोइंग डाउन तो डीजी सीमेंट इज आल्सो गोइंग डाउन. सिमिलरली इट कैन आल्सो बी कोवेरियंस अमंग 2 शेयर्स, अमंग 2 कंपनीज भी हो सकता है. For example, whenever Systems Limited goes up, so NetSol also goes up. So this is a positive covariance. And if Systems Limited is the price of Systems Limited share is going up, and the price of NetSol is going down, so there is a covariance, but that is called negative covariance. कि जब भी एक कंपनी की प्राइस ऊपर जाती है दूसरी कंपनी की डाउन जाती है, तो it can also be a possibility. So generally this is a covariance. How stocks move together. Either it can be positive covariance or either it can be negative covariance. As I have explained the word portfolio and we are dealing with the investment in stock market as an investor, so we need to diversify the risk. For example, you have 2 million and you invest all your investment in, for example, BOP, Bank of Punjab. आपने 2 मिलियन का 2 मिलियन सारा इन्वेस्ट कर दिया बीओपी में, दैट इज अ गवर्नमेंट बैंक. सो दैट इज अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट कि यू हैव इन्वेस्टेड ऑल योर कैपिटल इन वन कंपनी. So let's suppose Bank of Punjab, if governors of Punjab, like you can say, is going on a declining trend or they are not performing well, so it can impact also BOP. So BOP will go down, your investment will go down. So generally, as a financial consultant, advisor, they advise that you should have a portfolio and you should diversify your risk. कि BOP में ना करें, it can be in different sectors or different companies. When we talk about risk, so we have 2 kinds of risk. One is called systematic risk and the second is called unsystematic risk. And how we explain what is the difference between systematic and unsystematic risk. तो फोकस करें सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क मीन्स दैट इज रिलेवेंट टू द ओवरऑल सिस्टम. सिस्टमैटिक रिस्क पूरे सिस्टम का रिस्क. मार्केट एज अ होल, मतलब इस वक्त करंटली ग्लोबली ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड देयर इज सम अनसर्टेनिटी. आपने देखा होगा डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट वॉर डायनामिक्स चल रही हैं. रशिया, यूक्रेन, ईरान, इसराइल, मतलब
इसराइल के जो बॉर्डर्स में मुस्लिम कंट्रीज हैं, इवन अभी पिछले दिनों थाईलैंड और वियतनाम या कंबोडिया की भी वॉर हुई है। तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट, जैसे अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो डिफरेंट रीजन्स में अब उधर से कभी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आती है अगेंस्ट कनाडा, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर वाज इन चाइना दैट इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ यूएसए। तो देयर इज डिफरेंट, इस वक्त ग्लोबली अनसर्टेनिटी है, तो दैट इज अ सिस्टमैटिक रिस्क। People are moving towards rare earth minerals, people are making investment in gold or silver की prices last 1 or 2 years में they have been skyrocketed, तो different चीजें चल रही हैं। तो this is a risk, that is a systematic risk। मतलब अगर ईरान और यूएसए की वॉर स्टार्ट हो जाती है तो that is a systematic risk that will impact market as a whole and this is unavoidable। Systematic risk is unavoidable, unsystematic risk avoidable है। तो we can for simply you can memorize this concept ऐसे कि जब जैसे वो जनरली पीपल से कि जी सिस्टम से नहीं लड़ा जा सकता, तो सिस्टमैटिक रिस्क को आप नहीं डाइवर्सिफाई कर सकते, उससे अवॉइड नहीं कर सकते। जब अगर ईरान की वॉर हो जाती है तो दैट विल इम्पैक्ट ऑन ऑल कंट्रीज इन पाकिस्तान। सिमिलरली अगर IMF something approves or something refuse about the proposal of anything relevant to economy, so that will also impact all market as a whole। जिस दिन IMF की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आती है, all market goes up generally। This is also a systematic news or systematic risk, so that is unavoidable। अच्छा, unsystematic risk है। Unsystematic risk is that is typically relevant to the company। For example, CEO of Descon Chemicals leaves the company, and that he is a very good CEO and he has performed very well in the previous years। Let's suppose अब उसका जो CEO ने रिजाइन किया, तो that risk is only relevant with the Descon। Similarly, Miller Tractors का कोई एग्रीमेंट था जर्मन ऑटोमेकर्स के साथ, let's suppose, and that contract is now closed, is shut down, now they are moving towards other things, so that risk is with Miller Tractors। For example, HBL का बहुत सारा डेटा बैंक का लीक हो गया, डेटा लीक हो गया और साइबर सिक्योरिटी का इशू है, तो दैट इज द इशू विद HBL बैंक ओनली। तो ये है अनसिस्टमैटिक रिस्क। वी कैन एज एन इन्वेस्टर वी कैन अवॉइड दोज अनसिस्टमैटिक रिस्क, उनको अवॉइड किया जा सकता है, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट अवॉइडेबल। जो कंपनीज के इशूज हैं स्पेसिफिकली, और वो हो सकते हैं, इट मे हैपन के रफान मेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि उनकी लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, ठीक है, नेस्ले की दूध की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, तो इट कैन वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, तो दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, और वो अवॉइडेबल है और वो डाइवर्सिफाइएबल है। डाइवर्सिफाई मीन्स वी डिवाइड इट अमंग डिफरेंट कंपनीज, तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। That is why we are studying diversification portfolio। Y-axis पे standard deviation of portfolio return, standard deviation कितनी है, वेरिएशन कितनी है, रिस्क कितना है। So now you can see this is the total risk, और यहां से नीचे डॉटेड लाइन से नीचे सिस्टमैटिक रिस्क, दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क, this is unsystematic risk। तो by having more securities, by diversifying investment, this line is going down, और यहां पे आके it will become a straight line। तो it means unsystematic risk को हम कम करते 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 यहां तक ले आते हैं, but we cannot avoid systematic risk। तो systematic risk is unavoidable and unsystematic risk is avoidable, and this is the total risk। By this graph we can explain how systematic and unsystematic risk moves। टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि डाइवर्सिफिकेशन होगी, ज्यादा कंपनीज आ जाएंगी तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क, और वो क्लोज टू जीरो हो जाएगा। तो वी कैन अवॉइड, वी कैन डाइवर्सिफाई
unsystematic risk. So these are two major types of risk in finance: systematic and unsystematic. So this was the concept discussion. This is the graph. Now we'll move to financial calculation of this risk. So this was the concept of systematic and unsystematic risk. This is the graph. Now we will understand mathematical financial calculation of risk. Now comes the equation and financial calculation. तो इसमें very important topic is CAPM, capital asset pricing model. CAPM, capital asset